कुछ लोग देखेंगे, और मैं जाने से पहले और उनके देखने से पहले चाहती थी कि मैं अपनी फिल्म का कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करूं, सो दैट आई कैन लीव विथ योर गुडविल. एक्चुअली बिन still finishing the film, trying to get my theatrical print ready before we leave. So I have not been in touch with what's going on in the news, but if that is the case, we are leaving for Toronto tonight. We will be back, I think, in another 7 days. So we are glad to show the film to whoever wants to see it. Like I said, I mean, if there's anything I can vouch for, it's the integrity of this film. So, you know, it's fine. You know, a lot of films are based on real life stories. Yes. You've gone a little further and you've made Talwar itself. What were the kind of legal aspects that you anticipated? Have you already taken any precautions to protect yourself from any stays against the film that might crop up near the release? See, you know, if one thinks about all these things and starts getting cynical or precautious, you'll somewhere start affecting the integrity of the film or the intention with which you wanted to make the film in the first place. अगर इतना ही घबराना है तो फिर इस तरह की सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाना ही नहीं चाहिए. Having said that, yes, it is based on a true incident, but because it's a film, we've had to take certain cinematic liberties, certain characters जिनके बारे में हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हमको फिल्म में वन डायमेंशनल कैरेक्टर के बजाय मल्टी डायमेंशनल एक कैरेक्टर को बहुत सारे डायमेंशंस देने पड़ते हैं. तो उनकी पर्सनल ट्रेजेक्ट्री, उनके मैनरिज्म्स, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, these things we have to fictionalize, which is the reason why the names in this film are fictional. तलवार जिसका बार बार मुझसे पूछा जाता है, ये why is this the title? This is the sword, not the surname. It's the sword in the hand of the Statue of Justice. That is the talwar that we talk about. Right. And also, I want to ask you, the Sheena Bora murder case that's happening currently has some uncanny resemblances with, the Arushi Talwar case. The parents are the main suspects. The top cop has been removed in both the cases. So, have you been following the Sheena Bora case? Well, like I said, I've actually been quite out of touch. Whatever, मतलब थोड़ा बहुत I know about it, but I haven't been really like tracking it diligently because honestly I don't have the time right now. It was important for me to finish my film and get my print ready for our theatrical release in India and around the world. But yes, broadly one can understand that a lot of parallels बिल्कुल सामने से, they jump forward. One is obviously the public and the media interest in the story. Again, I say, and I said this about the आरुषि केस as well, कि अगर आरुषि केस में कहानी वही ख़त्म हो गई होती कि जो आपके घर में काम कर रहा था वो बच्ची को मार के भाग गया, तो उसमें इतनी इंटरेस्ट नहीं होती. जिस तरह से शीना बोरा के मर्डर में अगर ये इन्वेस्टिगेशन ये बोलती कि द ड्राइवर वाज रिस्पॉन्सिबल, तब भी उसमें इतनी इंटरेस्ट नहीं होती. इट्स बिकॉज द मदर केम इन टू प्ले दैट द इंटरेस्ट एंड the scandalousness nature of the case came forward. That is a very obvious parallel. Again, हमारी theories investigation ख़त्म होने से पहले शुरू हो जाती हैं, मीडिया में, पब्लिक में, हम घर में डिस्कस करते हैं. This is again a big similarity, and yes, of course, हमारी फिल्म में अश्विन कुमार जो कैरेक्टर हैं, जो इरफान खान निभा रहे हैं, वो भी केस से हटाए जाते हैं in between the investigation, just like Mr. Maria has been. So, and we didn't plan this. For this case to come up when our film was releasing, I don't think anyone could have planned this. It is unfortunate that it's playing out this way. And just the last question. Does it have an open ending, like a lot of unsolved mysteries, considering the case going on? Does it have a finite ending or is it? Well, an ending is finite always, otherwise it wouldn't be an end. What I can say is the film does end. It is not a film without an end. But if you ask me whether the film draws a conclusion to something, that it does not do. What it does is it takes the audience up to a point where they are fairly well informed to come to their own conclusion. Okay. Yeah? जिस तरह का ये घटना जी. जी. उसमें एक बात है कि इसके बारे में मीडिया ने या जिस तरह से खबरों ने, उसमें सबको बहुत कुछ याद है. जी. तो जोखिम किस तरह का था इस तरह के सब्जेक्ट पे काम करने का, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि
जी, इसमें एक्चुअली क्योंकि सबको और मीडिया को इतना कुछ याद था तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से मिल गया. हमारे फिल्म में जितना भी कंटेंट है वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में रेडिली अवेलेबल है. तो उससे आसानी बहुत हुई. लेकिन जिस तरह से इस मर्डर का के 2 थियरीज हैं, 2 सस्पेक्ट्स हैं, 2 अलग अलग मर्डर वेपन्स हैं, उस तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती थी उसके भी कई वर्जन्स होते थे. और तब जाके एक्चुअली समझ में आया कि अगर इस केस के बारे में फिल्म बनानी है तो फिर ये जो 2 पहलू हैं इनको इक्वली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है. वरना ये एक पार्शल फिल्म हो जाएगी और ये हमारी ना नीयत थी ना हमारी सेंसिबिलिटी है. तो मुश्किल इस बात की हुई कि वो ऑब्जेक्टिविटी जो है, एक न्यूट्रलिटी जो है, उसको मेंटेन रखना थ्रू आउट. चाहे आप कोई भी सीन फिल्म कर रहे हो, एज अ डायरेक्टर, एज अ परफॉर्मर, डोंट लेट योर इमोशंस लीन ऑन आइदर साइड, वरना वो फिल्म में कहीं ना कहीं जाके दिखेगा. That would have happened if I had seen the film, which I haven't yet. But even so, like I say to a lot of people who ask me this question, if one is afraid of what other kind of films are being made, then I don't think we would have made more than one love story in our industry. So every film comes with its own sensibility, and that leads to the way you execute the film. Besides the fact that you had to add dimensions to characters where you might have found none in reality, have you also introduced entirely new characters which don't exist in the real story? Not really, no. What we may have done is, if according to the real timeline, if you remember what happened in the initial days of the investigation, 3 police officers who were in charge of the investigation were repeatedly transferred. And if we have to do that as authentically in the film, we will be having so many characters that you will not be able to identify with either one. So like I said, sometimes you have to take certain cinematic liberties to keep your material and your content clear. So what we've actually done is probably amalgamated 2 or 3 characters into one rather than add fictional characters. That often happens. What you're suggesting is that some characters are composites of similar characters. Yes. Yes. Yeah. That's actually as far as we've gone with this. Yeah. The safety of children is at this point in the story. Well, this is actually a very layered question. For me personally, if you ask me, honor killing occurs much later in the life of a girl or a boy. Let's start with female feticide, where you don't even give a child a chance to be born. If you want to question something, let's start there. Because if you're not even going to give a child a right to life, what are we complaining about honor killing for? Yeah. जी नहीं, प्रिंट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो फिल्म फेस्टिवल में प्रिंट जाती है उसमें हमारे मार्केटिंग टाई अप्स, सैटेलाइट पार्टनर्स एट्सेट्रा, सेंसर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें नहीं जाती हैं और वो हमारी थिएट्रिकल प्रिंट में जाती हैं. तो इसीलिए ये इतना वक्त लगा रहे हैं मुझे मटेरियल देने में कि मेरी प्रिंट अभी तक तैयार नहीं हुई है. देखिए, हर फिल्म मेकर की तरह मैं भी वही एक्सपेक्ट करूँगी कि जितनी मेहनत से, जितनी शिद्दत से हमने ये फिल्म बनाई है, ये उतने ही उत्साह के साथ एक्सेप्ट की जाए. लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कहानी को जितनी दूर पहुंचा सके उतनी दूर पहुंचे. एंड फॉर दैट आई थिंक जो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का प्लेटफॉर्म है, इट्स बिन अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर अ फिल्म लाइक दिस, बिकॉज इट रेजेस द फिल्म टू अ हायर विजिबिलिटी, which I think is important for a film like this. इरफान खान साहब आएंगे वहाँ. जी. Because the whole case was reopened and currently was brought to the country. With Talwar, do you expect something of that sort to happen? What is the kind of reaction that you're going to get? And if
if I say my wishes out aloud, they're not going to come true. No, but I think Talwar's most basic intention is that let's the unanswered questions that I keep talking about, let's give them a voice. Let those questions get a voice. Let's start at least trying to walk on the journey of closure, if not get closure. If we get closure, nothing will be more fortunate, but at least let's begin the journey towards it. For me right now, that is what I expect from the film, what I hope for from the film. So far, do you think justice has been served rightly in the case? Well, when the verdict came out, if you have read up on it, I think our entire society, whoever was following that case, was polarized about a lot of glaring loopholes in that verdict, and the debate, I think, still rages today whether it is completely conclusively beyond reasonable doubt. जी वो मैं आपको नहीं बताऊंगी. मैं कौन सा वर्जन बिलीव करती हूँ ये जब आप फिल्म, हाँ, पर वो मैं फिल्म रिलीज होने से पहले नहीं बता पाऊंगी, नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि इट विल अगेन कलर योर अप्रोच टू द केस. मैं चाहूँगी कि आप जब इस फिल्म को देखने आएँ, आपका जो ओपिनियन है इस केस के बारे में, आपका जो कंक्लूजन है, आप सिर्फ वो लेकर थिएटर में आएँ. और फिर जब आप फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकलें, तो अगर हमने वो नज़रिया बदलने में अगर हम वो सक्सेसफुल रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो ठीक है. पर मैं अपना जो व्यू है या मेरी खुद की जो बिलीफ है, वो मैं आपके ऊपर डाल के आपकी थिंकिंग को कलर नहीं करना चाहूँगी. वो इसलिए कि अगर हमने कुछ किरदार के कुछ डायमेंशंस को फिक्शनलाइज किया है, तो हम कहीं पे भी फिल्म में सबटाइटल के द्वारा वो नहीं दे सकते कि ये कैरेक्टर फिक्शनल है, ये नहीं है, ये फिक्शनल है, ये नहीं है, ये रियल है, ये नहीं है. ओवरऑल देर इज एन एलिमेंट ऑफ फिक्शनैलिटी इन द फिल्म, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच जो हमको सिनेमैटिकली करना पड़ता है. लेकिन जहाँ तक इस केस के फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें हुई, जिस तरह से हुई, उस डेटा में कोई फिक्शनैलिटी नहीं है. फिक्शनैलिटी नाम, लोगों के नाम, जगहों के नाम वहाँ तक हैं. जो डेटा है इस केस के बारे में, उसमें कोई फिक्शनैलिटी नहीं है. वो एक्चुअली दे वर ऑलरेडी इन जेल बाय द टाइम हमने इस फिल्म के रिसर्च के दौरान कई लोग जो इस फिल्म केस से जुड़े हुए थे, इन्वेस्टिगेटर्स, फैमिली मेम्बर्स, हम सबसे मिले हैं. क्योंकि अगर हमने ठाना है कि हमको दोनों नज़रिए उतनी ही इक्वालिटी से दिखाने हैं, तो हमको मिलना सबको पड़ेगा. हम किसी एक पार्टी से मिलके सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके एक इक्वल और फेयर फिल्म नहीं बना सकते. जी जी उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई है. मेरी हमेशा एक्चुअली फिल्म अच्छी चले नहीं चले वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता है. कोशिश यही होती है कि फिल्म जो आपने बनाई है वो जब लोगों के सामने आए तो आपकी जो फैमिली है वो शर्मिंदा ना हो. दैट योर फैमिली, योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू. एंड बिकॉज पापा खुद एक फिल्म मेकर रहे हैं, वो मेरे लिए और भी ज़्यादा मायने रखता है कि एज अ फिल्म मेकर आई मस्ट मेक हिम प्राउड. एंड आई थिंक ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म. नहीं, उन्होंने बात नहीं की ज़्यादा फिल्म देखने के बाद. जी हो चुकी है यूए. यूए विथ नो कट्स. कुछ गाली गलौच थी जो उनको निकालनी पड़ी, बट नहीं, वो उनकी मतलब रिकमेंडेशन आई थी. अब जहाँ पॉसिबल था वहाँ म्यूट किया है, बीप अलाउड नहीं है वैसे. जी, जहाँ पॉसिबल है वहाँ म्यूट किया है, और जहाँ लगा कि कोई और लफ्ज़ जा सकता है जो ऑफेंडिंग नहीं है, वहाँ पे दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है. जी जी. It's 133 minutes.
The same thing that intrigues us as a society, that intrigues the media about it. Like I keep saying, why does it keep coming back, into the forefronts of our mind, into the forefronts of our news reporting? Because it just somehow lends itself to unfinished business. I'm not saying Talwar is going to complete that business, but yeah, it is that. I mean, somehow there is a lack of closure, in spite of everything, in spite of all the time that has gone by. And I think it's to explore those unanswered questions. Why is there that lack of closure? I think that was actually very, very intriguing, even while writing it for Vishalji and for filming it for me. The duration wasn't stipulated because we didn't even pitch the script to a production house till we knew we had a script. So the research was pretty open-ended. When we knew we had enough data and we knew that we could create a script with a definitive content, is when we went and pitched the script. That's what when everyone asks me कि what next, I'm like, इसने तो अभी तक ऐसे जकड़ के रखा है इस फिल्म में कि next के बारे में अभी तक सोचने का वक्त ही नहीं मिला है. But about a year and a half of production and about a year and a half, maybe 2 for research. So close to 3 years, 3.5 years on a film. So please be kind when you see it. Yeah. What about this particular thing? Yeah. This is a really, really dark side of our story. Yes. It's a negative also. Yeah. When you wrote, what was there in your mind and what you really wanted to portray on it, and try to give some kind of a message also to this film, because क्या मकसद क्या है? Subject क्या था? What made you? Actually, I didn't write the film. Vishalji has written it. But मकसद ऐसी फिल्म का जिसके जवाब जिन लोगों ने 3 बार लगातार इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है, जब उनके पास जवाब नहीं है तो हमारे पास जवाब भी नहीं हो सकता. तो इस फिल्म का मकसद जवाब देना नहीं है, लेकिन जो सवाल अभी भी खड़े रहते हैं दिमाग में, सोसाइटी में, मीडिया में, कई पहलू हैं इस केस के जिनमें इफ़ यू सी द डॉट्स, दे आर नॉट ऑल कनेक्टेड. उसी को एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि कहीं जाके अगर इस फिल्म के ज़रिए इस मुद्दे को एक कंप्लीशन मिलती है, या वो जो सवाल हैं उनके जवाब मिल जाए तो बहुत ही अच्छा. लेकिन अगर वो जर्नी भी शुरू हो जाए, प्रोसेस शुरू हो जाए उन सवालों के जवाब पाने का, यही मकसद है इस फिल्म का. नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है. नो, इट्स सी अल्टीमेटली अगर हम फिल्म बनाते हैं तो इट इज़ अ विजुअल मीडियम जिसका इम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है. लोग फिल्म देखने जाते हैं बिकॉज दे वांट टू बी एंटरटेन्ड, समटाइम्स इन्फॉर्म्ड. तो उस तरह से एक एस्थेटिक सेंस कायम रखना फिल्म में बहुत ज़रूरी था, जो हमने किया है, कोशिश तो की है. लेकिन उसके अलावा इस केस में या इस सब्जेक्ट में एक ख़तरा ये था कि ये कई बहुत ही सेंसेशनलिस्ट फिल्म बन सकती थी, जो हमने वी वर वेरी अवेयर ऑफ इट और हमने नहीं किया. इस फिल्म की नीयत बिल्कुल सही जगह पे है. कुछ पता नहीं. आई होप ज़्यादा वक्त नहीं, आई होप नॉट अनदर 7 years. उससे पहले काम करने का मौका मिले, आई होप. हाँ, नहीं, मैं नहीं बना रही उस पर, नहीं, नो चांस, नो, नहीं जी. The way the media behaved, that way I've shown them. No, the role of the media in news reporting, whether it's about cases like this, whether it's about the state of our country or it's about our politicians, is a double-edged sword. The media will not report things like this if we don't do things like this. If we are going out there and doing things like this and killing our children, the media will report it. But
yes, it would be nice if there is a certain sensibility or a sensitivity in that reporting, but I know that is easier said and done because I know the compulsions of ratings and grabbing eyeballs and TRPs. I do know that, I understand that. So I would go back to the root of it and say I wish events like this didn't happen for media to report on it. Meeting or दिक्कत आई थिंक सबसे ज़्यादा अब याद रहता है कि 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी में शूटिंग करना दिल्ली में बहुत आसान काम नहीं होता नहीं, इस फिल्म में डिटेलिंग बहुत अहम हिस्सा है. अगर आप एक ऑथेंटिक फिल्म बना रहे हैं जो सुपरफिशियल नहीं है तो आपकी छोटी से छोटी डिटेल सही होनी बहुत ज़रूरी है. उसमें बहुत लोगों की मेहनत गई है. जिस तरह से इस फिल्म को शूट किया, जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत ही सेंसेशनलिस्ट फिल्म बन सकती थी जो नहीं है, ना हमारी नीयत थी. तो इसमें हमारे जो टेक्निकल क्रू हैं, मेरे जो कैमरामैन हैं पंकज कुमार, मेरे प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स हैं सुब्रता चक्रवर्ती और अमित रे, और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर अभिलाषा शर्मा, इनकी सेंसिबिलिटीज़ मेरे साथ बिल्कुल ही स्ट्रीमलाइन थी. हम सब की सेंसिबिलिटी यही थी कि हमें एक सच्ची और एक सही फिल्म बनानी है, और वो जो मेहनत है सबकी वो नज़र आती है इस फिल्म में, विच इज़ वाई इट पुट्स यू इन अ रियल स्पेस. कभी कभी ऐसा, मतलब लॉट ऑफ पीपल हु सीन द फिल्म सो फार हैव टोल्ड मी कि कभी कभी उनको लगता है वो फिल्म नहीं देख रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली समथिंग दैट्स प्लेइंग आउट इन फ्रंट ऑफ देम. जी जी, आई थिंक हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि देर इज़ इनफ ऑडियंस फॉर 2 फिल्म्स, एंड जो पहले सिंगल्स ब्लिंग देखेगा वो अगले दिन तलवार देखेगा, एंड वाइस वर्सा. या जंगली पिक्चर्स. I have actually been focusing completely on the creative part, so this I think the producers would be a better people to answer. जी जी. मीडिया सर्कल बन गया था ये रिपोर्टिंग चैनल भी और अखबार रोजाना वाइट स्वैपिंग और बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज पोजीशन वगैरह पता नहीं क्या क्या बता रहे थे. आपने मीडिया हाउस के साथ मिलकर फिल्म बनाई है जी. तो थोड़ा सा आरामिकल ही है, और कंपल्शन आप मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन थे कि आपको टाइम्स ऑफ इंडिया है जी मिलकर बना रहे हैं जी. उन्होंने भी रिपोर्टिंग की, तो आप क्या कहना चाहिए? थोड़ा आयरॉनिकल तो ज़रूर है, लेकिन इस चीज़ में सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया को मिलना चाहिए कि एज अ मीडिया हाउस उन्होंने इस तरह का सब्जेक्ट अप्रूव किया, उसको अनकंडीशनली बैक किया. और अगर आप रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पूछें तो मुझे सिर्फ एक कंडीशन दी गई थी, टू मेक अ गुड फिल्म. उसके अलावा देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन मी एट ऑल. जी. he's a screenwriter and filmmaker. जी. You are a woman but from Mumbai. जी. How did this teaming up come about, and why did we sort of write and ask you to write, or is it the other way around? And so over casual discussions of what to do next, because enough time had passed and my son was now old enough for his mother to go out to work again. In the course of those casual discussions, several ideas were being thrown, we would brainstorm, and out of that, this was a subject which came up, which I found very, very intriguing, because like all of us, I have also followed the case since the time it broke. He was like a support to me on this, because for me the subject and the zone or genre of filmmaking is completely out of my comfort zone, which is why I left it to him to write it, because I mean he's a very, very accomplished writer, and what he does with his characters and with his screenplay, I don't think I would have been able to do, especially in a genre like this. It was fortunate for me that he had made the time. In fact, he took it upon himself कि मैं shooting पे, he was working on Heather at the same time, but he took it upon himself कि he will finish a draft of Talwar before he takes off to shoot Heather, which was very magnanimous of him. And
he's also the co-producer of the film. Yeah, I mean, I think it's something that's been ironically, it didn't happen for the longest time, and surprising that we never thought of it sooner. But I remember when Das Kahaniyan released, and he saw my segment in the film. I remember he had given an interview saying that I was so impressed with the film that I want to produce a film for her. It's taken us 8 years to get there, but we're here. Yeah. Yes, I did. I could not meet the parents. The thing was that because we had done a lot of research and we had kind of made a kind of timeline based on that research, we met several people connected with the case, whether it was the investigators, whether it was members of the family. I couldn't meet the parents because they were already incarcerated by the time we decided to make the film. And those meetings were important because if you have to present a balanced view of all sides, you need to meet all sides. But in the Delhi rape case, like, the government officials have given the accused to use they had made a document. After the time the parents Sorry, I didn't understand. Yeah, so they made a right. I wouldn't know because we didn't go down that road. So हमको पता नहीं कि हमको मिलती कि नहीं मिलती, but we didn't go down that road actually. I didn't say हमको नहीं मिल पाए. We didn't go down that road. It was not like we weren't allowed to meet. Yeah. हाँ जी. Yeah. मेघना जी, फिल्म फेस्टिवल्स में प्रीमियर करने लंदन और बुसान और टोरंटो जी. इसको कितना हेल्प किया? Again, everything is a double-edged sword with this film, like media's role. अगर फिल्म हमारे थिएट्रिकल रिलीज से काफ़ी देर पहले एक अलग ऑडियंस के लिए खुलती है. अगर बुरे रिव्यूज़ आए तो मर गए और अगर अच्छे रिव्यूज़ आए तो इट विल बी ग्रेट फॉर द फिल्म, आई होप. English, yeah. All our international prints actually have English subtitles. I think only the Asian festivals will subtitle it in their own languages. Yeah. कास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है जी. फिल्म के जी. और खासतौर पर नीरज का जिक्र करूँगा. नीरज का भी उनको कास्टिंग वाकई दिलचस्प हुई. उनको डिस्टर्बिंग कैरेक्टर है, वो देख रहा है. जी. नीरज सर की कास्टिंग एक्चुअली आई थिंक हमारा स्केड्यूल लॉक हो गया था क्योंकि इरफान खान साहब जो हैं ही वॉज ऑन द फिल्म इवन बिफोर वी हैड अ प्रोड्यूसर एंड वी न्यू दैट उनकी डेट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी कमिटेड. सो वी न्यू कि हमको इसी दौरान में फिल्म बनानी है एंड आई थिंक वी हैड 1.5 महीने का प्रेप टू पुट द फिल्म टुगेदर एंड बिकॉज द फादर्स कैरेक्टर इज सो ट्रिकी I think he was almost the second last person to be cast on the film because मतलब समझ में नहीं आ रहा था which way to go. But he came on I think 7 days before he went on floor. Luckily उनका काम थोड़ी देर बाद आया. But he's a very internal actor. वो आपसे सवाल पूछेंगे, वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, आप बैठ के उनको आई वुड एक्सप्लेन फॉर आवर्स टू हिम अबाउट द केस, अबाउट द कैरेक्टर. एंड क्योंकि हम फिल्म को लीनियर फॉर्मेट में नहीं शूट करते, वी शूट सीक्वेंसेस बैक एंड फोर्थ एंड सो द कैरेक्टर इज जंपिंग टाइम लाइन्स इवन इमोशनली. तो आई नीडेड टू नो माई मटीरियल बैकवर्ड्स कि इस वक्त ऐसे हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, ये सीन यहाँ आता है जब इससे पहले ये हुआ था. He would take all that information, completely internalize it, and then he would ask for some time. Give me 10 minutes, and he would go away into one corner of the set. The entire set would be silent. मतलब स्कूल में pin drop silence बोलते हैं ना, तो हमारा set classroom की तरह बिल्कुल खामोश हो जाता था. And then he would come, and it's very rare that I've asked for another take from him. Very very rare. Yeah. एक्चुअली कहते हैं कि जब किसी चीज़ का वक्त होता है ना तो फिर सब कुछ अपने आप ही जुड़ता जाता है. ऑल एक्टर्स ऑन दिस फिल्म आर द फर्स्ट पीपल दैट वी वेंट टू एंड दे ऑल सेड यस.
We didn't have to go for a second option, thankfully. Yeah. जी नहीं, मैं वेरी क्लियरली अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो इस फिल्म में हमने इन्वेस्टिगेशंस को दिखाया है. ओके, तो इस फिल्म में 3 इन्वेस्टिगेशंस हुए थे. पहला पुलिस ने किया था, दूसरा सीबीआई की पहली टीम ने किया था, तीसरा सीबीआई की दूसरी टीम ने किया था. 2 पहलू हैं, क्योंकि जो पुलिस की थियोरी है और जो सीबीआई की दूसरी टीम की थियोरी है वो ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें पेरेंट्स को मर्डरर बोला जाता है. और जो पहली सीबीआई की टीम थी उनकी थियोरी अलग थी. उन्होंने कहा था कि पेरेंट्स नहीं है, कंपाउंडर है और नौकर है जिन्होंने ये किया है. तो हमारे 2 वर्जन्स जो हैं वो एक सीबीआई 1 कह लीजिए और एक सीबीआई 2 कह लीजिए, ये उनके वर्जन्स है. ये ना पेरेंट्स के वर्जन्स है, ना पुलिस की वर्जन है, ना मेरी वर्जन है, ना विशाल जी की वर्जन है. ये दोनों इन्वेस्टिगेशंस जो हुई हैं ये उनकी वर्जन्स हैं. सबकी एक कड़ी है जिसके बारे में पूरा जी. ये कास्टिंग के अलावा एक वैसे एक कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है कि आपको वो किरदार या उस बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दिखानी है. क्या कुछ एक्सरसाइज नहीं. अगर मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं तो मैं मेरी फिल्म का बहुत बड़ा पहलू रिवील करूंगी यहाँ पे. सो नहीं देना चाहूंगी कि आप फिल्म देखें प्लीज. लेकिन एक इमोशनल कनेक्ट जो दिख रहा है आपकी बात से भी वो जी नजर आ रहा है. जी ऐसा रहा. जी हाँ, क्योंकि एक छोटी सी लड़की को जब हमको उसके साथ मर्डर सीक्वेंसेस शूट करने हैं, obviously you use a lot of special effects and prosthetics and things like that, but it's still violent. और हमको दोनों तरफ से वो शूट करना है. इट्स नॉट ओनली कि एक बार कर लिया और ख़त्म हो गया, हमको 2 बार करना है, 2 अलग अलग मर्डरर्स के साथ. वो मुश्किल था. और आई थिंक उसी दौरान पापा विजिटेड माई सेट व्हेन वी वर इन दिल्ली एंड उन्होंने कुछ लाइन्स उसी वक्त सेट पे बोली. Anish, give me my phone. I think it's written in there. 1 मिनट पढ़ के बताऊंगी. ये उन्होंने लिखी थी सेट पर. बस यही फ़र्क है हकीकत के होने और दिखाने में. बस यही फ़र्क है हकीकत के होने और दिखाने में. उन्हें डर था कि वो बच ना जाए, आपको डर है उसे लग ना जाए. These are his lines. आपने सोचा कि कोई लाइन ऑडियंस पहले तक बहुत देखा हुआ है. एक्चुअली इट्स वेरी फनी कि आपने ये पूछा, क्योंकि इरफान सर के साथ मेरा पहला दिन था शूट का और मैं उनको शॉर्ट ब्रेक डाउन बता रही थी. तो उन्होंने कहा, अरे यार मेघना, ये कहीं क्राइम पेट्रोल ना बन जाए यार. सो एंड आई थिंक उसके बाद उन्होंने दोबारा ऐसा कुछ नहीं कहा. सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Legal belief that justice should not only be done, but it should be seen to be done. Right. Do you respect this theory, or do you think that just doing justice is enough? I think there's a very fine line between doing justice and that deed being seen, because when you see something, it's a very subjective space to be in. What you may see as justice being done, I may not. But I think justice is truly done when it resonates with the majority of the people, with the majority of the society in which that justice is being given out, that yes, it has been done. It needs to resonate with the people and then it has been served. जी इसका सल्यूशन आसान नहीं है, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि हम एक डेमोक्रेसी हैं और डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
and the opportunity to be heard is very important. And I think we need to have space for a democratic dialogue where all parties can sit and talk. In a democracy आप अपने फैसले किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते, वो नहीं होना चाहिए. That's a dictatorship, that's not a democracy. बाई चांस एनी टाइम में कोई हिट एंड रन किसी बहुत से हुए कहीं पर ख्याल आया कि कोई आप क्या पूछ रहे हैं? हिट एंड रन केस जी. उस पर कभी कोई फिल्म बनाने की कभी अभी तक तो नहीं, बट आई थिंक ये फिल्म मेरे लिए वॉज द फर्स्ट टाइम इन अ रियल स्पेस. मे बी देयर विल बी मोर आफ्टर दिस. डन. और समझ जाता है कि second time देखने बाद you probably understand the meaning of the film more. But deeper titles also come Always. Kamine. Yeah. But the last one, I think, big round of applause. We are meeting after Heather, and congratulations on all the awards that you've got. Thank you. And it was a humongous effort at the box office. But you know, you don't do real life stories or inspired by real life stories very often. But you Real life story. This time we are giving the credit for the real, inspired from the real events. And that was it. So you suddenly decided that I'm going to take this story up. Obviously, very controversial, lots of versions of the truth. You know, there's a line in that, you believe what you want to believe. And I think India has believed what they felt like believing for many years. And is that the reason why you said, okay, let me try and give a version that I feel? No, that, it's you know, not can- my should be version. portrayed? Actually, it's not my version. You know how it started, because when we started researching, me and Meghna, for this case, and we found very bizarre, contradictory things, and each point of view has its own conviction, and so we thought that why not present all these three versions. Like if you remember a film called Rashomon. Rashomon has 3 point of views of a murder. So we have very honestly we have presented the conviction of all 3 point of views. We have not given any judgment. But you left it open for us to again believe what we want to believe. Yeah, I mean, that depends on your sensibilities. If you watch the film, you know what do you want to believe. I like that. Open ending is always fun because you can sort of come up with whatever you want. Preeti ma'am, this is, well, how should I put this? You all didn't take very baby steps. Dil Dhadakne Do, when you all decided to do that film. It was a big film, did very well, so congratulations on that. And then you come from that straight into this. So, you know, again, for a newer venture, it's a little bit gutsy, let's put it that way. And then you dive into a real life inspired story. Yes, of course, there's some very important people and correct people involved in it. But still, a big decision. This was a fantastic team to work with. And you know, this is something that has been brewing. It's less than 2 years. And a story like this happened over a cup of tea with Vishalji at his office. I recollect that he was going for the filming of Heather when he mentioned that there was a story that was inspired by what must be India's most intriguing case, or in the crime history of India, actually. And while I had followed the subject matter, read up, and while it was being featured, I wasn't I didn't know the intricacies of the case. And I asked him that, you know, why does he think that it's going to make for a very interesting narrative? And Vishalji, in his sartorial style, asks me to read the script before we can get into any discussion. And the moment you turn the last page, you know that this is a story waiting to be told. There is no way. So it's an easy decision. It's a great team to work with when you attract stellar cast, powerhouse of talent, like Irfan, who's known here and globally, Konkana, Neeraj, and everybody else who's come in to essay this. You know that there is something right that is coming with it. And of course, to tie it all up, there's Meghna, who brings in her maturity and her sensibility to tell the story perfectly. So I'm going to actually direct the next question to you. Were you a Hardy Boys fan or a Nancy Drew fan when you were young with these detective books? No. Did you ever, are you a crime fan? Do you like reading about not knowing the ending but reaching somewhere in between and then coming up there? No. More like Archie comics and Amar Chitra Katha. But this Katha involved a lot of research. A, because like I said, so everyone in India thinks they know the answer to this case especially. And then to
So you've got to make a film that doesn't have a predictable ending, and then still be as close to the truth as possible. So too much homework, I'm assuming. Yeah, fabulous. But was it very It was difficult? completely stepping out of everything that is familiar, comfortable, and I think that's what made it so exciting and challenging. More importantly for me, the very fine line was that while working, the names were characters, but very often it would come back to me that these are actually real people, and this has happened to them. So that was a little unnerving, but it's just been fabulous. And I think it's looking also very good. I love the trailer as well. And now I'll direct it to the entire cast as well. As was put so eloquently, three of perhaps the most powerful performers in our industry. Konkona, good to see you back again. And you know, this is a very, very strong script. Because you're portraying almost real-life characters, because you know it's inspired by a true events. So would you have to be that much more careful when you're researching for this role, even though it comes very naturally for you, but would you have to be careful when you're sifting through the records like, say, Meghna would have also done? Actually, I have to say that because the script was so thoroughly researched and presented the script has looked at every possible aspect of this investigation. So it didn't leave me very much in that sense to have to research for myself. In fact, Meghna had some research which she made available to us as well, which we went through. And the script itself, I mean, this is a case that everybody's familiar with, that we've been following. We have wittingly or unwittingly come across it on television and news, etc. And you read various stories on it. And at no point was I meant to, emulate any one particular real-life person. We were basing it on the facts that were available to everybody, and it is an interpretation of these facts. It's just showcasing these different elements. So I actually didn't have the burden of research on me. Brilliant characterization. But are you a detective story fan? I am a huge crime fan, yeah. Oh, I am a huge crime fan. Though I have to say with this film, I can't even see it as crime. Of course it is a crime, but it's a tragedy. You know, it's a tragedy on so many levels that I can't even see it as true crime, how we would, watch something like The Killing or, one of these shows that we watch. This is, it's beyond that. Irfan sir, good to see you on Indian shores, let's put it that way. Yahan aur wahan dono conquer kar gaye ho. Very few have done it. So first of all, I'm an even bigger fan of yours because of that. So now when you are doing this film, I know that you look at the script very carefully and everything is involved. So what made you say yes? Was it just Vishal ji? Was it Meghna? What was it? It's the power of the story. You see different versions. What happens with us, we read headlines of paper, or we listen to television, or somebody's version in the internet, and we have this tendency to believe those things. But I would say everybody has a responsibility to go beyond the headlines and do their own homework and then come to their own conclusion. We shouldn't let the headlines form your opinion, because that's what human beings are. They should be able to see their own truth. Our journey is about finding our own truth. And this, when I read this, Vishal Sahab said, please read this script, and I was shooting somewhere and he sent me this. And there was all versions of different versions of the story, but still there was so powerful emotion which was coming out of the story. So, and that was, that was something which compelled me to do this film. And I really want to congratulate Meghna the way she has, this kind of immense pain and consistency and perseverance it must have taken for her to come up with this, and the way Vishal Sahab shaped the story. So that little exchange that you just said, how Vishal sir sent you the script. How does one get in touch with Irfan Khan nowadays? Or is it all via email and WhatsApp, because one can't really pinpoint your location? So are you a tough person to catch these days? I think I'm the easiest one. Really? Yeah, this phone number. But the only thing is I have to change my number for the first time in my life, because it became so available to everybody that there was just calling me. Aur kya chal raha hai aajkal? So if your number is unreachable, it's because you're not in that select list that has the new number. Maybe you have an older number. Yeah, that's true. I probably have the older one. Right, Neera sir, I did love your performance in Byomkesh. And I have to say, you were a revelation in that film, because suddenly what happened I thought some Chandalika had come inside of you.
And that film, I didn't think got the appreciation that it should have. I don't think people understood how to appreciate that movie, but good to see you back again. And this film, a very important character for you, because the world is going to want to hate you. And if you do that successfully, possibly, with the version that is presented, you would have succeeded once again. So this was a big film for you as well. Yes, it was. And also, I don't know if the world will hate me or the Depending character. on the version, yes. The character, because the film presents multiple versions of the same story. And yes, it was an important film because of it being a real life, a true life incident. And when you perform this, you have to be extremely sensitive because you're putting various versions of human beings who are still alive today, who are suffering today. And you are there to present that. You're not giving a stance. So when you perform that as an actor, you don't take a stance on this. You don't perform in a particular way. You keep it as neutral as possible for the audience to judge and to take their own opinions. That is why it becomes a very important work for a performer. Well, I leave the audience to judge what they have seen and heard. And I will open it out to the house. So whoever would like to ask the first question, and to whoever. विशाल जी, आपसे एक सवाल करना था. वाईकॉम रेटिंग की एक फिल्म आई थी रहस्य, वो भी इसी तरह आरुषि मर्डर केस पर बेस्ड थी, लेकिन इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस होने के बावजूद उन्हें बहुत सारे उसमें चेंजेस करने पड़े. इवन वो जो जगह है वो दिल्ली से बदलकर उन्होंने बम्बई की थी. क्या आपको भी इसमें कुछ चेंजेस करने पड़े? नहीं, उन्होंने तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उन्होंने तो ये कहा ही नहीं कि ये फिल्म उस पर बेस्ड है, इसलिए रिलीज हुई वो फिल्म. नहीं तो वो फिल्म रिलीज भी नहीं होने वाली थी. तो उन्होंने तो लास्ट तक फिल्म मेकर ने ये कहा कि ये फिल्म उस पर बेस्ड नहीं है. तो मेरी तो ये नॉलेज है, बाकी तो that's what she's saying. Did you have to change certain things? नहीं, पर उन्होंने तो चेंज किया ही इसलिए कि वो बोल रहे थे कि उनकी फिल्म उस पर बेस्ड नहीं है. हम कह रहे हैं हमारी फिल्म उस पर बेस्ड है. So there was no trouble but in releasing it and getting. वो तो अब शुरू होगी, आज पहला दिन है. आप खुद एक पिता हैं, तो एक पेरेंट्स के एंगल से भी आपने उस चीज़ को छूने की कोशिश की है जो उस फिल्म में थोड़ा कम था. जी, मैंने तो वो फिल्म देखी नहीं, और जो मुझे बताया गया कि वो उस पर बेस्ड थी भी नहीं, क्योंकि जो कहानी थी वो कुछ और ही कहानी थी. और मेरे हिसाब से जितना मुझे लगा, जितना उस कहानी के बारे में मैंने सुना, मुझे लगा उसको एक कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ किया गया था, कि ये किसी तरीके, जो कि फिल्म मेकर्स के ऊपर उल्टा पड़ गया था. मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे महसूस होता है वो ये हुआ. बाकी उस फिल्म के आपका सवाल क्या था इसमें? जी, एक पिता के एंगल, आप खुद एक. अच्छा, आप वो उस फिल्म में बोले थे कि उसमें नहीं था. नहीं था तो इसमें तो मैं ना पिता हूँ ना बेटा हूँ. इसमें ये मैं एज ए राइटर इसमें देखा है कि इस इंसिडेंट के, इस क्राइम के 3 इन्वेस्टिगेशन हुए. एक पहले पुलिस ने किया, फिर एक सीबीआई टीम 1 आई उसने किया, और एक फिर सीबीआई टीम 2 आई उसने किया. उन तीनों के वर्जन्स, फर्स्ट और 3 के वर्जन्स सेम हैं, पर उनके रूट्स अलग अलग हैं, मर्डर ऑफ वेपन्स अलग हैं, और टीम 1 का वर्जन अलग है. तो एक तरीके से ये 3 डिफरेंट वर्जन्स हो जाते हैं. वो हमने जितनी ऑनेस्टी के साथ, जो हमारी रिसर्च में लोगों से मिलके, उन इन्वेस्टिगेटर्स से मिलके, जो उनके वर्जन्स हमें लगा कि ये सही हैं, जो वो कहना चाहते थे, हमने वो दिखाएं. अब उसमें ऑब्वियसली एक में पेरेंट्स किलर होंगे, एक में नहीं होंगे. तो उसमें जैसे आप बोल रहे थे कि उन्हें हेट करेंगे, तो किसी में दूसरे वर्जन में उनके पर दया भी आएगी. लेकिन ये अभी तक अनसुलझी पहेली है. क्या आपको ऐसा लगता है? जी, हम भी नहीं सुलझा, हमने भी सुलझाने की कोशिश नहीं की. जी, एंडिंग ओपन ही अभी. हाँ, यस. No, we have not taken the permissions of the parents. We have not taken. Preeti, my first question is to you. What made you choose such a controversial subject? See, cinema and our storytelling in cinema normally follows and takes its cue from our environment. And God knows we live in an environment today that is extremely interesting and aggressive. It's a headline story, and we resonate with it because it shook the belief system in India, the family structure and the belief that we have in the family structure. This is the one case that shook that. So not to tell such a compelling story cinematically would be a shame.
And it was not a difficult decision to arrive at. So one just went with it on the gut, because even as a narrative, it's very gripping and it opens up a lot of questions and thoughts, and it's thought-provoking and fits very well. Good one. Irfan, I come to you. आपको Hollywood star का या Bollywood star का है? अब sir, we are confused now. How do you manage everything, sir? ये कोई बीच का शब्द ढूंढना पड़ेगा आपको, कि मैं किसी वुड का कुछ वुड नहीं हूँ. And so, what made you come into this controversial? Why are you using this word controversial? So Controversial is something, you know, everything is controversial. We have this tendency of getting fed by cinema and, you know, newspapers and TV, you know. As a human being, we have a responsibility to find our own truth. If we are not doing that, then we are dead. We are worse than dead. So human beings should come to their own truth, and they should find their own truth. You know, it shouldn't be so easy for somebody. We shouldn't be so gullible. This is my take on life, and that's what make me choose sometimes a very lighter film or sometimes very complicated film. I did a film called Life of Pi, which was such a hugely, महंगी film, but still the filmmaker chose not to feed you. You know, the story doesn't choose you to feed you the truth. The truth, you have to find your own truth. I chose this story because the emotions were so compelling, the story was so compelling. And this is the story of our times. So, but it is still a mystery, sir. So that is going to get unfolded, or it's going to be the mystery Please forever? dwell into it. Dwell into it. Don't expect that somebody is going to give you the answer to that mystery. Mystery, you have to dwell into it. You can't find easy answers to it. The life is all about that. मेघना गुलजार से मेरा सवाल है. लोग कहते हैं आज हर चीज़ में पॉलिटिक्स घुस गई है, तो क्या इस फिल्म के दौरान भी आपको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा? किस तरह की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? मैं समझी नहीं. ये सब्जेक्ट है. इसमें तो पॉलिटिक्स का कोई लेना देना ही नहीं है. इरफान जी ये बोल रहे हैं कि इसमें कंट्रोवर्सीज हैं जो पॉलिटिकल हो सकती है, उसकी वजह से ऐसा कुछ बोलने को सोच रहे हैं? नहीं, आप भी कंफ्यूज्ड हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, what do you think this movie will make a difference to your life? It has already made difference. Now it is supposed to make difference to your life. When I read the story, there was a revelation for me that, you know, it grabbed me emotionally, and it gave me a kind of operating system, the way, you know, in a system different departments operate, and that's what, you know, I came to know through this film, and I lived that film, this story. Now it's, no, it has to do whatever it has to do to you. My journey on this project, I found it very interesting as a performer, because like we said, we have, you know, it's an investigative thriller. We have shown various aspects of this particular investigation. There are times, there are versions of the film where, you know, I mean, of this investigation where the parents are believed to be innocent, or they're believed to be guilty, or someone else is believed to be guilty. So one has to play it in many different ways. So of course, as a performer, it was very interesting. It was very challenging. It was, you know, very layered. That was interesting for me. But also, I think that it's important because, you know, this should never happen again. You know, if some kind of a crime is committed, you know, against a young girl, we should never be in this position ever again, where we don't know, where the evidence is so compromised, where we don't know, where there's no, you know, where justice has not been served. You know, this has been a travesty. And that is why the film is important. And that's why it's become controversial, because, you know, if the 13-year-old girl dies, you should know what's going on, and you should therefore punish the people who are guilty. So this should never happen again. Hopefully we'll never have to make a film like this again. My question is to Irfan Khan. One of the major reasons for movie goers is to watch this film is going to be seeing you and Konkona together, because people That love would be you a in that tragedy. film. Yeah, that's what I figured out in the You trailer. know, I think you should go. I think the trailer, you know, that's why nobody is the star of this film. It's if you really you have to find the star.
is the creator of this film, is the star. We are just we became part of it because we wanted to just support it. You just want to be part of it because we felt like that. I don't think it's giving us a scope to perform or show our talent or entertain you. It's just trying to engage you in our times, what's going on in our times. It's a compelling drama. So many different roles you do. What other different roles you expect now on? It's like you've covered every area, every genre. That don't thing is think so. happening gradually. So No. finishing up, people are going to finish up with scripts for you. So See, it's like a disease. You get engaged by some story, and then you look for antidote of that. So it's a never-ending thing. You do one film which is lighter, which deals with different things, and no actor can really encompass the whole life in his career. There's so many aspects to life, and you deal and you engage in those aspects through stories. So अभी तो शुरुआत हुई है. शादी ने बताया और जो थोड़ा बहुत हमें मालूम पड़ा है तीन वर्जन दिखाती है, पुलिस का, सीबीआई का, सीबीआई 2 का. जी. जब इतना सब कुछ ऑडियंस को पता चल जाता है आपकी ज़बानी, फिल्म में ऐसा क्या होगा तो बांधे रखेगा, क्योंकि स्टोरी तो जैसे सबको पता ही हो गई है कि 3 वर्जन दे रहे हैं और अलग अलग तरह के, एक पुलिस का, एक सीबीआई का, फिर सीबीआई 2 का. या आपने किसी सीबीआई ऑफिसर से मुलाकात की थी फिर उनको अपने किरदार को तैयार करने में? आप सीबीआई अब क्या ऐसा है जो बांधे रखेगा, क्योंकि स्टोरी. देखिए, अगर ये सच्चाई होती कि स्टोरी पता हो जाती है और आपको अगर स्टोरी पता है तो आप फिल्म देखने ना जाएं तो आधी से 90% फिल्में चलती नहीं. आप स्टोरी किस तरह से सुनाते हैं वो बांधता है आपको, और फिर अगर फिल्म में सब्सटेंस है तो फिर सब्सटेंस बांधता है. वो आपके साथ रह जाता है. लेकिन कहानी सुनने का मज़ा वही है, सुनाने का मज़ा वही है कि आप किस तरह से लोगों को बांधते हैं, किस तरह से सुनाते हैं. तो इसमें जिस तरह से स्टोरी कही गई है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको ज़रूर बांधेगा. बजाय इसके कि ये अब हम अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहे हैं, उसके उस तरफ फिल्म ना तो आपको कंपेल करती है, ना उस तरफ आपको खींचती है, ना उस तरफ धकेलने की कोशिश करती है कि हम आपको ये सच्चाई दे रहे हैं, ये सच है जी. कहानी सुनाने का अंदाज जो है वो ऐसा है कि वो आपको बांधेगा. और कहानी में भी ऐसी सीबीआई बहुत सी ऑफिसर, मैं चीज़ें तो जानता हूँ बहुत सारे सीबीआई ऑफिसर जिंदगी में जितने लोगों से मिला हूँ वो सब आप हमेशा जो है फिल्म जब आती है और उसका रिसर्च मटेरियल को आप उस वक्त जाके नहीं ढूंढते हैं, कभी कभी ढूंढते हैं, पर हमेशा आपकी ज़िंदगी का जो पिछला एक्सपीरियंस है, आप कई लोगों से मिले होते हैं, फिर उन सब चीज़ों को एसिमुलेट करते हैं, देन उनसे एक वर्जन निकालते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं. And I just want to know, there is a rumor that you have been doing a Japanese television show. Is that true? I am doing a show, yes. Okay. So how it's going on? No, nothing going on. I'm just doing it. So when we can? I'm not in a position to talk about it. Just got a mail in the morning. You want to see the mail? Yes. जैसे यू हैव गॉट अ स्टेलर कास्ट, वेरी टैलेंटेड, लेकिन उसमें ऑब्वियसली कोनकना इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, नीरज जी इज़ वेरी गुड, बट यू हैव इरफान इन होम देर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू टैप द इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स इंडिया के एक्टर्स ले रहे हैं ताकि वो इंडियन बॉक्स ऑफिस को एक्सप्लोर कर सकें और अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ा सकें. विद इरफान ऑन बोर्ड, आप किस तरह प्लान कर रहे हैं कि इस फिल्म को आप इंटरनेशनल अरीना में इस नाम को कैपिटलाइज कर सकते हैं, इसको इंटरनेशनल मार्केट में और ज़्यादा पॉपुलर कर सकते हैं फिल्म? आई थिंक प्रीति इसका जवाब दे तो बेहतर है. Yes. Yeah. So the good news is for this film is that we're premiering in the Toronto International Film Festival, and after that in the London Film Festival. But you're right, there is a lot of interest that has been evinced because Irfan is a part of it, but also because of the subject matter. So we're going to break this up. It's going to release on October 2nd in what we call the traditional markets internationally, which is the Indian diaspora. But we're going to stagger it and work very closely with an international sales agent, one of the finest in the world, that will take our film from country to country outside of the diaspora. And I suspect it's going to be a staggered release. But one of the things that we have realized in the last 2 weeks is that the interest has been for the case and Irfan. And of course, it will be handled accordingly. But it's going to be a staggered release internationally.
एंड इरफान, कुछ सालों पहले आपने मेरे एक इंटरव्यू में बोला था कि आपके मतलब हॉलीवुड में जो एजेंट है आप उनको पैसे देते रहते हैं लेकिन कुछ काम तो आ नहीं रहा। लेकिन पिछले सालों में हमने देखा कि जितना भी आपने उनको फीस दी होगी उसका कई गुना वापस आया एंड यू हैव मेड इंडिया सो प्राउड अक्रॉस द बॉर्डर। अभी ये बताएं कि इंडियन डायरेक्टर्स और इंटरनेशनल अरीना में डायरेक्टर्स को आप कंपेयर करते हैं, सबके साथ आप काम कर चुके हैं। इंडिया में क्या स्टीरियोटाइपिंग अभी भी सिनेमा में एक बड़ी प्रॉब्लम है, या लोग एक एक्टर को एक्टर की तरह लेते हैं और एक पर्सोना की तरह नहीं लेते हैं? क्या ये एक अभी भी मेंटल ब्लॉक है यहाँ? आई थिंक ये मेंटल ब्लॉक नहीं है, एक सिनेमा का एस्पेक्ट है जहाँ के क्लीशेड और एक जो स्टीरियोटाइप जो है वो वर्क करता है। बिकॉज अगर मैं इसकी आपको दूसरी तरह से एग्जांपल दूँ, इसमें एक लाइन है, जिस दिन समय ने आंखें खोली उस दिन इंसाफ 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 होगा। समय कोई अलग सी चीज़ नहीं है, समय को हम भी अफेक्ट कर रहे हैं, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो अफेक्ट करता रहता है, हम जो हैं वो समय है। तो एक लोगों की ज़रूरत होती है कि वो स्टीरियोटाइप ही देखें, वो अपना बैठे रहें, आप नाचें गाएं और वो जो है खुश होकर चले जाएं। वो एक तरह की ऑडियंस है और इसमें कोई जजमेंट नहीं है उनके ऊपर, ना उनको वो कोई लोअर दर्जे के लोग हैं, उनका अपना है, उनकी चॉइस है ये। और कुछ लोग होते हैं जिनको और भी चाहिए होता है, सिर्फ टाइम पास के अलावा भी कुछ चाहिए होता है कि जब वो घर जाएं तो वो कहानी गूंजती रहे, वो आपके साथ रहे, वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पे असर डाले, आपकी सोच में असर डाले, और ये कोई सुपीरियर वे नहीं है कहानी को देखने का, बट है ऐसे दो लोग हैं अलग। हमारे यहाँ की इंडस्ट्री में ऐसा भी अब कहानी कही जा रही हैं जो आपके साथ रहें, जैसे होता था पहले भी था, 60s में था, 70s में था, 50s में था, कि कहानी एक डील भी करती थी किसी इशू से, और साथ में वो कुछ और भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती थी। आप एक किताब पढ़ते हो 5 दिन तक, महीने भर तक, 6 महीने तक, साल भर तक, वो आपको रिमाइंड कराती रहती है कि आई एग्जिस्ट एंड आई हैव टोल्ड यू समथिंग। ऐसे ही सिनेमा का वो एस्पेक्ट हमारे यहाँ ख़त्म हो गया था। ये बहुत ही बदतर एक टाइम आया था 90s का, और कुछ आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट वो fortunately that has gone, and now industry and the setup is giving you opportunities to deal different stories, and that's why the new talent is coming up. That's why we are looking okay and happy that we are getting the stories which we can enjoy while doing it. So and please मेरे एजेंट को ऐसा मत बोलिए, वो काम नहीं, मैंने ये नहीं बोला था काम नहीं लेता पैसे लेता था, वो काम आता है तभी पैसे लेता है वो। लेकिन एक गलतफहमी है हमारे यहाँ कि आपको अगर एजेंट मिल गया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये मैं कहना चाह रहा था कि एजेंट आपके लिए काम क्रिएट नहीं कर सकता, वो मीडिएटर होता है, काम आता है तो वो आप तक लाता है। और हॉलीवुड में बगैर एजेंट के यू कैन नॉट सर्वाइव। वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपने फ़ोन उठाया और पूछा हेलो जी क्या हाल है, कैसे हैं, आपको यू हैव टू गो थ्रू एजेंट। हाँ, इट इज़ यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, अदरवाइज यू कांट फंक्शन। सो आपके लिए कोई काम क्रिएट नहीं कर सकता है, ये मेरा कहने का। मेघना जी, फाइनली ये आप ही का बेबी है, इतने दिग्गज लोग इसमें हैं लेकिन फाइनली आपका बेबी है। आप खुद एक मदर भी हैं और एक फिल्म मेकर भी हैं। ये जो कहानी है ये जितनी ज़्यादा सेंसिटिव है उतनी ज़्यादा सेंसेशनल भी है। तो क्या कहीं आप बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर हैं, क्या कहीं कमर्शियल एंगल को रखने के लिए आपने इसको ज़बरदस्ती का सेंसेशनल बनाने की कोशिश की है या कुछ? जी नहीं, मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ था नहीं जी। जब स्क्रिप्ट लेवल पे एक इंटेग्रिटी कायम हो जाती है तो वही फिल्म में दिखाई देती है, और उससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल थी और इतनी मजबूत इंटेग्रिटी थी। और फिर उसके बाद जब इस तरह के परफॉर्मर्स फिल्म में आते हैं, एक्टर्स इस तरह के जो खुद भी बहुत ही इतने सेंसिटिव होते हैं कि दे आर ऑल्सो ट्रेडिंग दैट वेरी थिन लाइन वेरी केयरफुली, सो एवरीथिंग देन फॉल्स इनटू प्लेस। सो बाकी और कुछ हो ना हो, इस फिल्म की एक जो नीयत है जिसको कहते हैं वो सही है। जो इसके ट्रेलर में दिखाया गया तो ये पेरेंट्स के भी तरफ से लिखी गई है। ये तो फिल्म देखने के बाद ये वैसे पेरेंट्स की तरफ से नहीं लिखी गई है, इसमें 3 इन्वेस्टिगेशन, बार बार हम कह रहे हैं कि 3 इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, पेरेंट्स की तरफ से नहीं है, किसी और की तरफ से नहीं। जो हुआ है इन्वेस्टिगेशन में वो हमने वैसे का वैसा दिखाया। Vishal ji, given the fact that you have extensively researched on this subject, what's your personal take on this story? Who are the real killers according to you? ये तो हर कोई पूछता है कि हुआ क्या था और किसने मारा।
तो मैं बता दूं तो आप प्रीति को पहले 15, 16, 20 करोड़ रुपए दीजिए तो मैं आपको बता सकता हूँ. Sir, second one, as a filmmaker, what is the ultimate intention behind making a movie like this? जी? As a filmmaker, what is the ultimate intention behind making a movie like this? And when would you say that aim would be successful? Success, I think, is there because we are able to make this film. I think that's enough for me as success. क्योंकि इस तरह की फिल्म बनाना और उसको उसमें इरफान, कोंकणा, नीरज जैसे लोगों का होना, वही एक अपने आप में बहुत सक्सेस की बात है मेरे लिए. क्या वजह है कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में फीमेल डायरेक्टर्स बहुत कम हैं? आई डोंट थिंक ये कोई कॉन्शियस डिसीजन या प्लान है. आई थिंक ये विमेन के ऊपर निर्भर है कि वो मतलब चूज़ करें डायरेक्ट करना या नहीं. एंड इफ़ यू आस्क मी, आज की तारीख में तो वी हैव अ लॉट ऑफ फीमेल डायरेक्टर्स देन 10 साल पहले अगर आप देखें तो. और असिस्टेंट्स में आप जाके देखेंगे तो मेल बहुत कम है. जितने असिस्टेंट डायरेक्टर्स अभी आ रहे हैं उसमें फीमेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है. तो आने वाले वक्त में आई थिंक यू विल सी मोर. No, thank you. No, thank you. I mean, I think you would be heartless not to be moved by this emotionally. No, because it's really such a horrific tragedy that has occurred to a family that how can you not be moved by this? And of course, I mean, as a mother also, I mean, I now I think today I can, it has even more of an impact on me, I mean, enacting those scenes. But I don't think you need to be a mother to kind of really understand the, you know, the horrific nature of this tragedy. I think that, you know, I mean, human empathy is such that one can empathize with people, even if you're not a mother, you know, you can understand misfortune and tragedy in others, right? I mean, you don't have to be in Nepal to experience the earthquake to kind of truly grasp the magnitude of it, right? I want to ask a question on a lighter note. Since we've spoken so much about Hollywood with Irfan, now let's go back to you, Konkana. So many years ago, Life in a Metro, the two of you, and now when you meet him, has he become spoiled? Now that he's traveled all over and he's got these millions of dollars coming in, you would know him the best, because I think that film got him out there, and suddenly never saw both any of you. evidence of any millions of dollars, I have to say, unfortunately. So no, but otherwise, has he changed a lot? When you meet him now, is there a lot more advice and a lot more tajurba that comes forth in your discussions with him? I'll give you a chance to defend yourself, sir. What should I say? No, actually, I think that we've always, both of us have, you know, kind of been very kind of respectful and reserved and shy and, you know, cordial. And I don't think that, you know, that hasn't aspect has changed. changed at all. I mean, I wouldn't have known if I had not read the papers or if I didn't know and had not watched his other fabulous films. Just in my previous films, acting with him and acting with him in this film, I would not have known कि इतना कुछ हो गया इनके साथ. I wouldn't even have known. मतलब मैं स्टैटिक हूँ, मैं बदल नहीं रहा हूँ, जैसा था वैसे ही हूँ. Bouncer वाली this is not a compliment. मतलब nothing, मतलब I'm not growing, I'm not evolving. मैं था जैसा डे वैसे ही हूँ. ऐसा ही है वो. Said this is the first day and there might be objections in the near future with regards to the film. That was a joke. They won't buy. But are you guys looking at it? Are you guys open to any changes in the script, or there might be cuts in the film, or probably? The film is already censored. Film is already censored in UA certificate, and so is our trailer. Pick this character firstly, and also, you know, it is a very sensitive character. So, what kind of research really went on when you were trying to portray it on the big screen? First of all, I didn't pick the character. I was asked by Meghna to play this, and what made me play this character? Are you asking me that? It is a very sensitive character. We know about that. When you thread a very thin line Yes. when you play somebody which incident which has happened in real life. yes. So, like, what are the research that went from your part? Research is all the documentation that has been done on the case, various video recordings, various written documents, a lot of written documents that includes even a whole booklet and a lot of material given by the director herself to me. And all that, tracing the entire thing was very important for me, at least, as a performer. So right from the day it began and whatever else has been written on that, I had to read everything to really sense what is happening and not be opinionated about it. That was very important, because you form your own opinions as a human being first,
and that might come into your performance. So all that research becomes essential, at least for me as a performer, so that I take a stance not as a human but as an actor. I am giving you a neutral representation of what all those versions are all about, and that requires all this research, yes. Also, when you read all these things, you begin to almost not live it, but yes, on a moment-to-moment basis, you are continuously thinking about that, because it's a live character, as I said earlier. It's not somebody, it's not a biopic. It's somebody who's still living, and there is human empathy. So whenever you are reading everything or watching videos of interviews of the two parents, you are continuously breathing and living those sensations and those feelings. There were moments in the shoot where all that research would help tremendously to really find my way into what I'm doing in the scene. And they were very, very powerful. I'm a father myself, and I'm a father of a daughter, so that makes it even more powerful for me to represent this. Hi, this question is for each one of you. We'll take this one, yeah. Yeah. As I'm not asking you the question as a performer, but as a person, like each one of us have an opinion. What were you guys thinking, or what is your opinion personally? What happened that day? Irfan, you can. Yes. No, I think we have answered that, because it's not that who did what. This is the investigation. Yeah, so not about the film. I'm talking to you as in a personal level. What do you think had happened? Because we have made personally this film. So this is our point of view. There are 3 point of views, yeah, right? there are 3 point of views. So, you know, it's as confusing as the mystery is. But okay, that's a writer's point of view. What do you guys think? What happened? See, again, what Vishal Sahab said, कि 20 crore रुपया आप रख दीजिए, बता देते हैं हम अपने. See, the case is sub judice. So if they give their opinions, they'll say they're sort of forming another public opinion. So, you know, that would become... That's the thing, you know, somebody asked कि आप क्या point prove करना चाह रहे हैं कि इससे क्या होगा. See, we are afraid of wondering. We are in the habit of being fed something into our system. So I think it's a high time that, you know, we should confront that with ourselves and see that, you know, we have much more potential than being just fed, like an amoeba, you know, who eats and shits and reproduces. The Talwars would be distressed when they get to know that a film is being made on their slain daughter's life. I mean, they are already, I think, in distress. They are in jail, and you know, and they say that they are not guilty, and at least one investigation is showing that. Right. My question is, would they be happy seeing a film like this? How can I tell and answer you on their behalf? And one more thing I want to say: the person who was saying कि कहानी तो सबको मालूम है, इसमें ऐसा क्या है जो बांधे रखेगा. इसमें बहुत सारी वही चीज़ें हमारे लिए एक्साइटिंग थी जो कि डिटेल्स लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या बिजारनेस इस केस में सिस्टम ने की हैं और हुई हैं, और वही देखने का इसके अंदर मज़ा है जो कि किसी को मालूम नहीं है उन डिटेल्स के बारे में. और हर रात को न्यूज़ चैनल पर हम लोग देखते हैं, सारी खबरें पता होती है, फिर भी 1 घंटा हम देखते हैं, वो भी बांधे रखता है, टीआरपी आती है. सो थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन. विल जस्ट हैव अ लिटिल फोटो ऑप एंड देन वी प्रीटी मच डन. या दोस दैट मिस्ड अर्लियर. या And if you want specific star cast, I'll just direct you all then.